Hi everyone, so welcome to our channel Medico Prime Education. So in today's video, we are going to discuss the intercostal muscles. This is the intercostal muscles. The very important question for your university exam also, and very important for you also to understand the mechanism of breathing. So mechanism of breathing is very important. So that we have to understand the what is intercostal muscle. Okay. Intrinsic muscles of the thoracic wall also we have to understand. So the same thing is that intrinsic muscle of thoracic wall. Can you guess the any other intrinsic muscles in our body? Can you guess? Okay, you are correct. The some of the intrinsic muscles in our hand also. We have hand also in the we have in hand. We have also the intrinsic muscles. So this is not the hand. I have already discussed that intrinsic muscle in the lectures of the upper limb. But today we are going to discuss with the intrinsic muscle of thoracic wall. So in the earlier lecture, we have formed the thoracic cage. So this is your outlet, okay, thoracic outlet, and this is your diaphragm. There is a thoracic inlet, and this is the abdomen, and here is the vertebra. Okay, so this is the vertebra. This is the sternum. So, and this is the thoracic outlet. So we have all understood the all this part, how the thoracic cage is formed, how thoracic cage is formed. So in the deep of that thoracic cage, we are going to discuss the lateral boundary of the thoracic cage. So we made the thoracic cage, na? So we will discuss the how the lateral boundary is formed. The lateral boundary is basically the forms is made formed by the ribs एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन देम। ठीक है, दो चीज से बना हुआ है रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल से। तो वही चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट मैं आपको बना के दे दिया हूँ। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पिछले लेक्चर में लास्ट में ये बताया था कि क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 स्टार क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वहां पे आप जाके दे सकते हैं जिसमें हमने डायफ्राम को डिस्कस किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक मसल, जैसा कि आपको पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल कहने का मतलब ये है कि दो मतलब इंटरकॉस्टल स्पेस में जो मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस किसको बोलते हैं? दो जो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होते हैं, ठीक है, जो इस रिब्स ये रिब्स हो गया रिब्स, तो ये जो रिब्स है ना, इस स्पेस को इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, दो रिब्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं। Have you understood? Okay. So now let's move to the our main point of view, understanding point of view. So this is the important topics, and this is also important topics. This is the very important topics. Long answer question mostly asked from these two topics. Okay. Otherwise, all are short notes. And also diaphragm is also a long question here. Okay. So our main topic is to understand the intrinsic muscle of the thoracic wall. So basically, in the thoracic wall, where we have three types of muscle, and their arrangement is also fabulous. Their arrangement, I will discuss their arrangement, how the fibers runs. Okay, so first muscle is known as external intercostal muscle. This is the most superficial layer. Okay, if you remove the skin, superficial fascia, and after that what you will see the external intercostal muscle, and after that you will see the internal intercostal muscle and transverse thoracic muscle. This is the deep layer muscles. Okay, so intermediate and deep layer. So understand here one more thing here कि क्या है यहाँ पर जो इंटरकोस्टल नर्व्स है, इंटरकोस्टल वेसल्स है, ये जो नर्व्स और वेसल्स है, ये किसके बीच में रन करता है? तो इट रन्स बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड डीप लेयर। इंटरमीडिएट एंड डीप लेयर के बीच में ये जो दो नर्व्स है, जिसको बोलेंगे इंटरकॉस्टल नर्व्स एंड वेसल्स। ठीक है, इंटरकॉस्टल आर्टरीज एंड नर्व्स, ऑल दिस रन इन बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड डीप लेयर, and this plane is known as neurovascular plane. We will discuss also neurovascular plane in the upcoming slide also. So what here you can see, this is the most important diagram. You will have to remember this diagram all the time. Okay, so can you guess the how this diagram comes? How the no, I will discuss. I will discuss how the nerves arises in the
intercostal nerves. But main point of view, I will discuss also nerves in the next video. Understand? So, but our main point of view to understand the muscle arrangement. Okay. So suppose if you are like that, if you this is the man, okay, and this part is the thorax, this part is the thorax. So if we cut this man like that, okay, and we are seeing the from the superior view, okay. So basically this is the posterior view. Okay, this is the posterior side, this is the anterior side where sternum is present. Understand? So, arrangement, where you have to understand the arrangement here. Here. Understand? So, let's see the our first muscle. We are going from the superficial to the deep. So, our first muscle is the internal intercostal muscle. What is the internal intercostal muscle here? Which is the internal intercostal muscle? See, this is the intercostal muscle, internal intercostal muscles. I am showing in the black color. This is the external intercostal muscle. So, this is not the origin. I am showing the attachment here. Okay, so how the arrangement like that from superficial to deep, how this arrangement look like. Okay, so first outer superficial is known as external intercostal muscle. Here you can see the this muscle, this muscle. Uh, Here you can see the it's attaches to the it attaches to the vertebra here in the posteriorly, and after that this muscle goes like that, and this attaches to the hair membrane is known as anterior intercostal membrane. So there will be also a posterior intercostal membrane. So this is the posterior intercostal membrane. So this is the posterior intercostal membrane you can see. This is the posterior intercostal membrane. This is the posterior intercostal membrane through which the posterior inter through which the which muscle attaches? Which muscle attaches through this membrane? Internal intercostal muscle. So external intercostal muscle. Next is internal intercostal muscle. So first is external intercostal muscle. Second is internal intercostal muscle. Now third muscle is that. Third muscle is the combination of three muscles. This is also known as transversus thoracis. ठीक है? And transversus thoracis composed of three muscles: intercostalis, intimus, and subcostalis and sternocostalis. So there are three muscles here. Understand? So let's see. Here is the subcostalis muscle. This is the subcostalis muscle. Okay, this is the subcostalis muscle on both sides. Understand? And after that, there is a intercostalis intimi. Intercostalis intimi. Intercostalis intimus or intimi is both things. Both are same. Intimus is a singular. Intimi is a plural. Okay. So intimus, intercostalis intimus, you can see here. And sternocostalis. This muscle attaches to the sternum here. So known as sternocostalis. Okay. So this is all about the internal intercostal muscle. Now, if we see in the sternocostalis muscle, here you can see the sternocostalis muscle. Origin is this muscle is totally different origin and insertion. Okay, and apart of that, remaining muscles have around the similar origin. You can appreciate in the upcoming slide. So here you can see the origin. Here, sternocostalis muscle arises from the lower one third of the body of sternum. So this is it arises from the lower one third of the body of sternum and xiphoid process and costal cartilage of 3 to 4 true ribs. So here you can see na कि this is the intercostalis muscle. It arises from the lower one third of the body of sternum. This is the body of sternum ना. So this is the lower one third. In the posterior side ये अंदर की तरफ से इसका attachment दिखेगा ठीक है ना अंदर की तरफ से so attaches like that and xiphoid process attachment and also the costal cartilage here you can see the costal cartilage से भी attachment यहाँ पर में दिख रहा है and insertion कहाँ है insertion on the costal cartilage of second to the sixth rib so it inserts to the costal cartilages of the second to sixth rib so this is the second rib this is the first rib and it arises from manubrium stridii so third fourth fifth sixth rib so it arises from the sorry, it insert to the costal cartilage of the second to sixth rib. Okay, so this is the insertion and origin of the subcostal sternocostalis muscle. Now, let's move to the origin and insertion of the
external intercostal muscle. So for the understanding this concept, you have to remember this diagram. Okay, so forget the intercostal space right now. So basically, you have to understand these ribs. So first of all, I will make it totally different. Okay, so totally I will make it the bad way. So please take the screenshot right now. Okay. So first is in external intercostal muscle origin. It arises from the lower border of the rib above. Matlab, we have two ribs. This is the first rib. Okay, I will make on that also. Okay, I will make on that. This is first rib. This is second rib. Okay, so this is rib number one. This number rib number two. Means is upper lip. So it originates from the lower border of the rib above. So this is the upper border. This is the upper border. This is the lower border. So it arises from the lower border of the above rib. Okay, it arises from the lower border of the above rib. Here you can see the diagram. It arises from the lower border of the first rib and it goes like that. Here you can see how it runs, it fibers. You can see this, it runs like that. कभी तुमने अपने जैकेट के पॉकेट में हाथ रखा है? बस उसी तरीके से जैसे अपने हाथ रखते हो ना, वैसे ही इसका फाइबर्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें ये इसमें बोल रहे हैं कि लोअर बॉर्डर से अराइज हो रहा है और अपर बॉर्डर ऑफ द आउटर लिप ऑफ द रिप। ठीक है, तो तुम्हें पता है जब रिप पढ़ोगे तो उसका दो लिप होता है, आउटर लिप एंड इनर लिप। तो ये कहाँ जाके एक्सटर्नल है तो आउटर लिप पे जाके अटैच हो जाएगा, लेकिन किस पे? अपर बॉर्डर पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपर बॉर्डर ऑफ द आउटर रिप पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ। I will discuss the extent also. Understand? So first of all, extent is not much so important. We have to know the direction fibers, nerve supply, and actions. Okay. So basically, you have to learn. Next is internal intercostal muscles. So same thing. It arises from the floor of the costal groove of the rib above. Okay. So above rib से यहाँ पर में क्या होता है? ये जो rib होता है, ठीक है, ये जो rib होता है, यहाँ पर में एक तरह का groove बना लेता है। ठीक है, यह हम लोग इंटरनल अंदर तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर के तरीके से देख रहे हैं, तो ये ग्रुप बना लेता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बनाता है ना, इस ग्रुप से अटैच अराइजमेंट लेता है, किसका? अपर रिब से ऑरिजिन लेता है। ठीक है, और ये कहाँ चला जाता है? अपर बॉर्डर पे तो जाता है, ये आउटर लिप पे जा रहा था, ये कहाँ जाएगा? इनर लिप ऑफ द रिब बिलो, उसके नीचे का जो रिब होगा उस पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वाइवा में पूछते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको याद करो। अब तुम जब कभी भी अपने पॉकेट में हाथ डालते हो कुछ इस तरीके से, ये तुम्हारा हाथ है। ठीक है, कौन से पॉकेट में हाथ डालते हो? जैकेट के पॉकेट में। ठीक है, सबने जैकेट पहना होगा जिंदगी में। ठीक है, चलो, तो जैकेट के पॉकेट में हाथ डालते हैं तो ये किस तरीके से डालते हैं? देखो, डाउनवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है और मीडियली जा रहा है। ऐसे तो नहीं डालते। ठीक है, ऐसे डालते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है एंड मीडियली जा रहा है। ठीक है, अब ये इसको ना इसी तरीके से याद रख सकते हैं। इसको मैं 2D में अभी नहीं समझा सकता। आप ना अपनी तरीके से समझो कि जैसे आप पॉकेट में हाथ डाल, एग्जैक्टली डिट्टो उसी तरीके से यहाँ पर में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का फाइबर रन करता है। अब उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा कर दो। कैसे? अप डाउनवर्ड का उल्टा, अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, ये फॉरवर्ड तो जाएगा ही, दोनों मसल फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, दोनों मसल यहाँ पर में तुम्हें दिख रहा है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल भी यहाँ पर में क्या जा रहा है? फॉरवर्ड ही जा रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, इस बार ये अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, ये इस बार अपवर्ड जा रहा है और मीडियली जा रहा है। तो मीडियली और फॉरवर्ड तो सेम है। ठीक है, यहाँ पर में बस डाउनवर्ड को फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सेम नर्व सप्लाई सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टल नर्व्स ऑफ द सेम स्पेस। इंटरकॉस्टल नर्व सेम स्पेस मतलब कहने का मतलब क्या है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इंटरकॉस्टल नर्व्स जो होता है अलग अलग, इंटरकॉस्टल स्पेस का अलग अलग होता है। तो जिस इंटरकॉस्टल स्पेस में जो इंटरकॉस्टल नर्व प्रेजेंट है, क्या बोला? जिस इंटरकॉस्टल स्पेस में जो इंटरकॉस्टल नर्व प्रेजेंट है वही उसको सप्लाई करेगा। ठीक है, understand? Okay, okay. So next is the intercostalis intimae. So it arises from the inner surface of the rib above. Okay, so upper rib से ये inner surface से जाके arise होता है and inner surface of the rib below, उसके नीचे वाला जो rib है उसके inner surface में जाके अटैच हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीमस। ठीक है, अंदर ही अंदर जाके अटैच होता है, मतलब इंटीमाई वाला क्या करेगा? इनर सरफेस। याद से याद रख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, सो
It is also supplied by the intercostal nerve of the same space. And direction of fibers की बात करें तो upward, forward and medially same. ठीक है, upward, forward, medially same, upward, forward, medially same. इसका भी same होगा, लेकिन ये sternocostally थोड़ा सा ये अलग है. ठीक है. अब सब कॉस्टालिस क्या होता है ये आप देखो यहाँ पर में सब कॉस्टालिस का अरेंजमेंट कहाँ है। ये सब कॉस्टालिस है। आपको पता है रिब्स अगर अगर रिब्स इस तरीके से जाता है, रिब्स इस तरीके से जाता है तो यहाँ पे कहीं उसका एक्सटर्नल एंगल होता है। ठीक है, तो सब कॉस्टालिस छोटी सी मसल है, वहीं से अरेंजमेंट लेगा ना, वहीं से अटैच लेगा ना। लेकिन हम लोग बोलते हैं वहीं से अटैचमेंट तो लेगा, सॉरी ओरिजिन तो लेगा, लेकिन वहां पर में इनर सरफेस ऑफ द रिब नियर इट्स एंगल, तो वहां पर में क्या होता है जब ये रिब्स होता है ना तो यहाँ पर में इसको एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल से जाके अटैचमेंट करता है। ठीक है, इनर सरफेस से। एंड इनर सरफेस ऑफ द कहाँ से ओरिजिन कर लेता है, सॉरी इंसर्ट कहाँ से करता है, इट इंसर्ट टू द इनर सरफेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रिब बिलो। ओके, सेकंड एंड थर्ड रिब उसके नीचे से जाके वो अटैचमेंट इंसर्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसका भी डायरेक्शन सेम है, अपर अपवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली सेम है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, सो नेक्स्ट आवर मेन पॉइंट ऑफ व्यू इज स्टर्नोकोस्टालिस। नाम से पता चलता है स्टर्नम से अराइज होके कहाँ जाएगा, कोस्टल कार्टिलेज पे। ठीक है, स्टर्नोकोस्टालिस मतलब ये कहाँ से अराइज होता है, लोअर वन थर्ड ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। ठीक है, तो पोस्टीरियर वन थर्ड सरफेस मतलब हम लोग जो सामने से जो स्टर्नम देख रहे हैं, जो सामने से स्टर्नम देख रहे हैं ये एंटीरियर सरफेस है। ठीक है, इसके पीछे से हम लोग जाके देखते हैं तो यहाँ पर में स्टर्नोकोस्टालिस दिखेगा, बॉडी ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, यहाँ पर में आप नोट डाउन कर लेना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ओके, उसके बाद ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जिफॉइड प्रोसेस, मैं आपको पहले ही वहीं पे बताया था नहीं कि पोस्टीरियर सरफेस से ही जाके अटैच होता है, इंटीरियर से नहीं। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ लोअर थ्री एंड फोर्थ स्टर्नम। जब आपको ये याद हो जाता है तो आपका अटैचमेंट भी याद हो जाता है, इतने पार्ट का तो अटैचमेंट याद होता है, स्टर्नम बोन पूछते हैं एग्जाम में, वाइवा में, तो ये इसका अटैचमेंट भी आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, चलो। सो हैव यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकॉस्टल मसल? If we understand the concept of intercostal muscle, so in the short notes, what we have to write? We have to write like that also. Either you can make the table, either you can make the table, or you can write down in the points like origin, insertion, or you can point like that. First point, you have to make the origin, then after that insertion. After that, what we have to write down? Insertion. If you are able to learn the extent, it's good, but not much important. And after the direction of fiber, and last point is the nerve supply and action. Okay, I have forgotten the action. Well, I have to discuss also. So, how to remember the actions here? So, do you know the during the inspiration, which muscle comes into role? Which muscle comes into the role? External intercostal muscle. During the inspiration, have you inspired? If you inspire, you will appreciate that your ribs is being elevated. Which muscle is going to be function here? External intercostal muscle. And during the expiration, normal expiration, I am talking about the normal expiration. And during the normal expiration, your uh, ribs is also going to be elevated during the normal expiration. Okay. And after that, thoracic transversal thoracic, the intercostalis intimus, it also elevates the rib during the expiration because their direction of fiber is same, na. So this do like same. Here you can think like that. Okay. And the pressure of rib, which muscle depresses the rib? Subcostalis. And which muscle draws the second to sixth cartilage downward? Sternocostalis. So this is the action here. The main action is the external intercostal, internal intercostal muscle. Basically role in the expiration and inspiration. Okay. So this is all about the internal intercostal muscle. So if short notes will come, you have to write in this point. You have to write and you have to make this diagram and you have to make this diagram. Okay. And if possible, you can make this diagram. This is very, very common diagram you can see all over the books. So this we are going to discuss the internal intercostal space basically. So you can easily understand uh, from the name intercostal muscle. So it is a space between the two adjacent ribs. Okay,
and their costal cartilage also. So there is a space between the two adjacent rib or their costal cartilage is known as intercostal space, and a space is known as intercostal space. There are total 11 intercostal space on each side. ठीक है, इस साइड मतलब एक साइड में 11 है तो दूसरे साइड में भी 11, तो का टोटल कितना हो गया? वेरी गुड, अच्छा है, 22। ठीक है, इतना तो अप्रिशिएट कर सकता हूँ तुमसे। ठीक है, ओके। So there are what are the content here? The three intercostal muscle. I have already discussed all these three. Okay, intercostal nerves, intercostal arteries, intercostal veins, intercostal lymph vessels, and nodes. So basically, you have to make the arteries, nerves, veins. Okay, intercostal in the intercostal space. So it may be the arcs. It may be asked in the short notes also. So you have to remember like that. Okay. So if we discuss the most important Viva question here, most important, very very important. Okay, I will drive a van here. Okay, I will drive a van. Okay, so for the understanding the neurovascular bundles in between the intercostal groove, or you can say the intercostal muscle, intercostal space, there is a presence of intercostal groove. Here is the intercostal groove. This is the intercostal groove. So there is an arrangement of what neurovascular bundles in the intercostal space. So neurovascular bundle consisting of intercostal nerves, vessels lies between the internal intercostals and innermost intercostal muscles. Do you understand that this is the intermediate layer and this is the deep layer? Understand? Between the intermediate and deepest layer of the muscle. So this intravascular neurovascular bundle will not present between the superficial and intermediate. It is always present in between the intermediate and deep muscle of layer. Okay, so they are arranged in the form of order: intercostal vein, intercostal artery, intercostal nerve. So what are the arrangement from above downward? मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। ये आपका रिब नंबर मान लो 1 हो गया, ये रिब नंबर 2 हो गया। तो रिब नंबर 1 से और 2 के बीच में ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं तो इंटरकॉस्टल वेन मिलेगा, इंटरकॉस्टल नंबर, इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटरकॉस्टल नर्व। Okay, so these three you can see VAN. Understand? So one more thing here you can see. This is the external intercostal muscle. No? This is the external intercostal muscle. Here in this diagram you can see. Here in this diagram you can see that external intercostal muscle, internal intercostal muscle. उसके बाद क्या है? Intercostalis intimus. Intercostalis intimus दिख रहा है, ठीक है। After that you can see a fascia is known as endothoracic fascia. Here is the endothoracic fascia after the intercostalis intimus, and after that you can see the costal pleura here. Okay, costal pleura, you know, inside the costal pleura there is a presence of the lungs. So this how the lungs is situated in our body. If you cut the transverse section ना, so you will see like that. Not transverse section, lateral section. ठीक है? So you will see like that. Okay. So this is all about the arrangement of the ribs. This is the lemon diagram, not exactly. Okay. So this is all about the intrinsic muscles of the thoracic wall. So very important here. मैंने आपको 3D इमेज दिखाना भूल गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब आप देखो समझो। जब मैं सब कुछ पढ़ा दिया ना, तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैं एक तरीके से मतलब दूसरे तरफ का मैंने हटा दिया यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो दूसरे तरीके से मैं हटा दिया। आप देख रहे हो यहाँ पर में स्टर्नम है, ठीक है। ये यहाँ पर में स्टर्नम यहाँ पर में दिख रहा है ना। ये स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम, ये रिब्स जा रहा है, ठीक है। ये रिब्स जा रहा है, ठीक है, ये रिब्स जा रहा है, ठीक है, ये रिब्स जा रहा है। ओके, इन बिटवीन द रिब्स आप देख रहे होगे ये जो आपके पास है, ये क्या है? ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है। आप इस तरीके से पॉकेट में हाथ डालते हो ना, इस तरीके से पॉकेट में क्या डालोगे? हाथ। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से पॉकेट में हाथ डालते हो ना, देखो, तो ये इस तरीके से डाउनवर्ड मीडियली जा रहा है, ठीक है, एंड फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर ये मसल देखोगे, ये जो मसल है इंटरकॉस्टल मसल, ये अपवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है और मीडियली जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से याद रहेगा। ओके, सो यू कैन अप्रिशिएट लाइक दैट। Here you can see and this you can। अब तुम एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, इस दोनों मसल के बीच में देखो आपको एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस मसल्स के बीच में आप देखो एंगल बनता हुआ दिखेगा। अरे कहाँ भाग गया यार, आ जा बे, कहाँ लूट के चला गया। ठीक है, ये देखो, ये दोनों मसल्स के बीच में आपको एंगल बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये बार बार भाग जा रहा है।
ठीक है। ये जो मसल है ना, इस दोनों मसल के बीच में आपको एंगल बनता हुआ दिखेगा। ये एंगल है ना 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इतना देर से बता ही रहे हो, ये भी बता देते। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनता हुआ दिख रहा है। समझ गया बात? ओके, यहाँ पर मैं पूरा मसल नहीं दिखाया, देखता हूँ कोई और डायग्राम को। इसमें भी नहीं है। इसमें देखते हैं। ठीक है। Okay. So here you can see the external intercostal muscle. Here you can see the external intercostal muscle, and here you can see the internal intercostal muscles. Okay. So here you can see the internal intercostal muscle. ठीक है. Understand? So this is all about the intercostal muscle. So if you see this diagram cadaveric image, so you can totally appreciate. This is the internal intercostal muscles. Okay. External intercostal muscles, and here you can see the external intercostal muscle, and this is the internal intercostal muscles. Here upward fibers जाता ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो बोल देना इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, नीचे की तरफ आएगा तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, ये ये बहुत मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंट सा वो पॉइंट है जिसे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसे ज्यादा हम नहीं समझा सकते। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट वीडियो किस पे रहेगा? हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इंटरकॉस्टल नर्व्स पे, जिसपे हम लोग इंटरकॉस्टल नर्व्स पे एक क्वेश्चन आता है, टिपिकल थोरेसिक नर्व। ठीक है, टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व, नॉट थोरेसिक, इंटरकॉस्टल नर्व। ठीक है, टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व्स पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।